Hello everyone, welcome to my channel. I hope all are doing well. I hope my videos are helping the students somehow. So in this video, I am going to talk about sentence, its characteristics and types. Please like, share, subscribe my channel to get more such videos. So let's start the topic. So sentence that requires when we speak and write answers. हम लोग जब बात करते हैं तब sentence में बात करते हैं. Even the most important things when we write the answers. So if we utter a single word or write an answer in just one word, so the person will not understand what we are intend to say. So we should speak and write in a sentence, the people will get easy to get it what we want to say. So while speaking or writing, we use negative words like no, never, or interrogative marks, that means ask questions or use emotions to convey our thoughts. So it means there are different types of sentence, so that we are going to learn in this video in details. So let's start. फर्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स वर्ड्स का जो ग्रुप है इस तरह से अरेंज होना चाहिए जिसमें एक कंप्लीट मीनिंग दे. दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस शुड बी कंप्लीट इन मीनिंग, शुड बी अरेंज इन कंप्लीट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ए गुड बॉय. सो इट इज़ कंप्लीट इन मीनिंग, राम अच्छा लड़का है. If we write like this, boy a Ram good is, you can see it is not defining a complete meaning as it is not in a complete order. So we cannot say it as a sentence as the words are not in order. इसको हम कह सकते हैं कुछ words सब लिखा हुआ है जिसका मीनिंग अनक्लियर है. जब हम लोग इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक राम इज़ ए गुड बॉय. Characteristics of sentence. So first of all, it start with capital letters. ये capital letters से शुरू होता है. Next one is sentence के end में full stop, exclamation mark and question mark होगा. So these are the mark we can see in the end of a sentence. Last one is sentence को दो part में divide किया गया है. One is subject and other one is predicate. So एक sentence में subject and predicate रहना पड़ेगा. It must be there. So sentence consists of two parts. Now which is subject and which part is predicate. Subjects are that naming part जो बताता है sentence किसके लिए बोला गया है and किस चीज़ के लिए है. For example, the house is white means ये sentence house के बारे में है, बता रहा है which is white in color. Thus the house is subject. Same like next example, the red car is fast which is telling about the red car. So the red car is subject. Coming to the next part, predicate. Predicates are that telling part which tells about the subject. Predicate बताती है क्या हुआ, what actually happens. Complete information देती है. You can say predicates complete the sentence. For example, the house is white. We know here the subject is the house. तो इसके बारे में जो part of the sentence information दे रही है that is predicate, जो है is white. You can recognize the predicates in this way also. First we have to know the subject. तो subject को छोड़ के जो part रह जाता है that is predicate. There are some more examples where you can see the subject part and predicate part. Okay, now sometime we will find difficult to find the subject. So take the verb which is in the sentence and ask question with who or what. For example, gardening is a good hobby. So gardening is subject because gardening के बारे में बोला जा रहा है जो एक अच्छा hobby है and the part which telling about gardening that is predicates. So if we find difficult, we can use question like what is a good hobby. The answer is gardening. So gardening is subject. When it comes to person, you can use who and ask question. Same like the sun is very far away from earth, where the sun is the subject and is very far away from earth is predicate. The students are studied hard for the test. Here also the students is subject because the sentence is telling about the students and the other part is predicate which gives the information about the subject which means the students what they have done.
These are the types of sentence: assertive or declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. Moving on, now we will learn it in details. First one is assertive or declarative sentence. Which sentence are called declarative sentence? जितने भी चीज़ हम बोलते हैं और समझते हैं, डिक्लेयर करते हैं, that is called declarative or assertive sentence. It can be positive and negative both. For example, Arun is 4 years old. So here it gives the information that Arun का age 4 years है. ये चीज़ हमें बता रहे हैं. It is not giving or asking question or advising. सेकेंड, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन ये सब होता है. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट टेल ए लाई. हियर एडवाइसिंग इज गिविंग, कभी झूठ मत बोलो. प्लीज़ हेल्प मी, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं. गेट आउट फ्रॉम हियर, ऑर्डर किया जा रहा है, बाहर निकलो यहाँ से. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर इम्पेरेटिव सेंटेंस. पहले सेंटेंस सब में वी हैव सीन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो नाउ इंटेरोगेटिव में वी आस्क क्वेश्चन, मतलब हम क्वेश्चन पूछते हैं. इन दैट केस एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है. जनरल एग्जाम्पल लाइक वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. WH वर्ड्स लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई. सो दीज आर क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स लाइक व्हाट इज़ योर नेम, हु स्टोल माई पेन. डू यू नो मी, आप मुझे जानते हो. इसका आंसर येस और नो में होगा. सो जितने भी सेंटेंस ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लाइक इज, एम, आर, वाज, हैज़, हैव, डू, डिड, डज, एंड ऑल्सो मॉडल वर्ब like can, could, should, will, would, may, might. So the sentence start with these auxiliaries. उनका आंसर हमेशा yes and no में होता है. Like are you angry? Can I borrow your English book for a day? Next one is exclamatory sentence. इसमें हम exclaim करते हैं. It means strong feeling और sudden emotion को express करते हैं. That may be happiness, sadness or any kind of tension or pain. In these types of sentence we use exclamatory mark. जैसे full stop, question mark हम use करते हैं. Here we are using exclamatory mark. For example, what a lovely picture. इसमें हम लोग what word का use कर रहे हैं. That we use in interrogative sentence, but इसमें we are not asking question. Here we are expressing our emotion that the picture is very lovely. इतना अच्छा है ये picture. If we talk about optative sentence, इस sentence में we show our blessings, आशीर्वाद, prayers and curse, बद्दुआ भी दे सकते हैं. In that case, these sentences are called optative. For example, may God bless you. Here we are not informing, asking, advising, expressing certain emotions. Here we are praying for someone. Again, sentence can be divided into two groups, affirmative and negative sentence. Affirmative sentence indicates a positive sense, किसी भी बात में एग्री करना जो सच होता है. फॉर एग्जाम्पल, रीना इज़ ए गुड गर्ल, आई प्ले बास्केटबॉल. एंड नेगेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स नेगेटिव सेंस, इट ऑल अबाउट इनकरेक्ट और जो ट्रू नहीं होता है और वी आर नॉट एग्रीइंग. हियर वी यूज नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, नो, नेवर, नथिंग, नन. तो ये सब वर्ड्स रहने से दैट सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, रीना इज़ नॉट ए गुड गर्ल, आई डोंट प्ले बास्केटबॉल.